Hi friends and welcome back to my channel and that I'm so glad that you are in my video again because it's good. Okay, so as I told you before that nowadays our sir is in holiday. He is not teaching us. So I just like take my practice class and do little bit revise and all. Okay, so let's get into this that I have started a like book series in which I'm gonna read a paragraph each day and I'm gonna explain it in Hindi as I told you before, right? Okay, so it's our third day, I guess, not fourth or fifth. I don't know. Okay, so Hanuman Thapa's postal address was provided in the interview. Without wasting much time, I took a postcard and wrote him. I wrote only two lines saying that I was interested in meeting him and asking whether he could come to Bangalore. Just then, my father, ever a practical man, returned from his morning walk. He read the postcard and said, "Where will he have the money come so far? If you want him to come here, send some money for this like for his bus fare and a little extra to buy himself a decent set of clothes." So I landed oh sorry so I added a third line to say that I would pay for his travel in some clothes. With 4 days I received a similar postcard. In reply, two sentences. In the first, he thanked me for the letter. In the second, he expressed his willingness to come to Bangalore and meet me immediately. I sent him some money and detail of my office address. So the यहाँ पर क्या हुआ कि हनुमान थापा का जो पोस्टल स्टैम्प था वो इंटरव्यू में उसको मिल गया, तो उसने फटाफट से पोस्ट कार्ड लिया और उसमें 2 लाइन्स लिखी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप आना चाहते हो बैंगलोर तो हम मिलते हैं, ऐसे करके उसने लाइन लिखी। तो उसके बाद हम अपनी मॉर्निंग रूटीन वॉक से आए और उन्होंने पूछा कि उसके पास पैसे होंगे इधर आने के लिए, तो क्यों ना आप मतलब तुम उसको थोड़े से पैसे भेज दो उसके किराए के लिए और उसके कुछ नए कपड़ों के लिए। तो उसने वहाँ पे 3 लाइन ऐड करी कि मैं इस चीज़ के लिए आपको पे करूँगी, तो आप अगर आना चाहते हैं तो आप बताइए या फिर आइए। तो कुछ 2-4 दिनों बाद उसको वापस से वो पोस्ट कार्ड रिसीव होता है, जहाँ पर वो पहले तो धन्यवाद बोलता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक विलिंगनेस होती है उसके अंदर, वो आने की बहुत अच्छी इच्छा होती है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें देख के कुछ दिनों बाद वो उसको वहाँ पर मनी सेंड कर देती है। आगे की स्टोरी वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट डे। सी यू टिल देन, टेक केयर।